on the great writer Munshi Premchand's 144th birth anniversary today, this morning I simultaneously read his two celebrated short stories, Shatranj Ke Khiladi 1924 and Eidgah 1933. One felt entranced by the descriptions of the life in the early 20th century by an author in complete command of his supreme literary craft. It was by some coincidence that I read two short stories that depict life at the two ends of the economic spectrum of the era. Eidgah deals with poverty at the edge of society with charming subtlety and dignity, while Shatranj Ke Khiladi talks about two decadent feudal lords addicted to playing chess, utterly oblivious to the world around them that seems to be spinning out of control. It's a tribute to the genius of Premchand that in just a few deft sentences he lures the reader into 4 or 5-year-old Hamid's penurious but still uplifting world in Eidgah, Hamid's decision to buy a pair of tongs for his grandma who regularly burns her fingers while making rotis rather than sweets and toys to celebrate Eid, like other children, leaves one heartbreakingly touched. The author employs his much celebrated craft in Shatranj Ke Khiladi to bring alive the characters of Mirza Sajjad Ali and Mirza Roshan Ali, the two unabashed hedonistic chess players in Lucknow. It's extraordinary how in a dozen or so sentences Premchand paints such captivating portraits of the two contrasting realities. In Shatranj Ke Khiladi, he writes about the extent of how unconcerned everyone had become by saying that even beggars use their money to buy opium rather than bread. In Eidgah, he captures in one sentence a telling detail of life then when he writes about how people rush to a local oil merchant with their hardened leather shoes to soften them with oil. By any measure, Premchand, who lived between July 31st, 1880 and October 8, 1936, ranks as one of the world's great writers so completely immersed into the socio-cultural realities of his time. This year marks the 100th anniversary of Shatranj Ke Khiladi, and it might be instructive to read that remarkable short story. वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र, मिसी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजिफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें ज़ोरों के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी,
जीविका की कोई चिंता न थी कि घर में बैठे चखौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेंच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम।